आज का व्लॉग क्या मतलब अपनी राम कथा या प्रेम कथा जो भी मान लो स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हुआ क्या हुआ सब कुछ सबको बताऊँगा। और हाँ, कुछ इसमें सजेशंस भी दूंगा, अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी जर्नी तो शेयर करूँगा ही करूँगा। उससे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मेरे लिए प्रेयर्स की या जिन लोगों ने भी मुझे वेल विशेस विश किए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू guys and seriously love you all. So let's start the video. I will share my all the journey, how it start, and what happened exactly, and what I did, and I can give you some opinion and suggestion what you can do in these kind of the situation as well. Like I wish and I pray that no one falls sick and किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, बट इन केस लाइक ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है देन you should have the options like what you can do in that kind of the situation. So let's start with the video. So first of all I will share my experience like what exactly happened. Like it was Thursday, last Thursday, last Thursday, and I was on my shift. Shift means I was at my part-time job, and like it was from 9 to 7 p.m. And after like and the temperature was around 23 degree and we were feeling so hot. Like the chef was there, she opened all the windows and the doors, whatever the doors available on the kitchen, in the kitchen she opened all the door. Even there was a fan, separate fan available, so she plugged in that and she run that fan as well for in order to like we can feel fresh air and we don't feel the hot or the temperature. So basically, and after like when she left around 4 p.m, and after that like around 5 or 5:30 I start feeling shivering. I don't know how इतनी तेज मुझे ठंड लगने लग गई धीरे धीरे। मतलब पहले तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई, देन आई स्टॉप द फैन एंड I was not even wearing the jacket, only the t-shirt like this. And after that suddenly I took my jacket and wore it. और फिर उसके बाद व्हेन माय शिफ्ट एंड्स अराउंड 7 आई स्टार्ट वॉकिंग टू गेट द ट्रेन। जब मैं ट्रेन पे बैठा देन तब मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लग गई। देन आई वाज वेयरिंग द मास्क, सो मैंने मास्क भी नहीं उतारा। देन वंस आई केम टू द माय रूम, लाइक आई वाज कमिंग फ्रॉम द हाइट स्टेशन, तब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई। माई व्हेन आई रीच्ड एट द फॉरेस्ट रोड वेयर आई लिव, I couldn't believe myself. Like once I opened the door, I was like shivering so bad, and my headache. You can't believe. Like I never had these kind of the headache in my entire life, and the body pain. You won't believe me. Like the same as the body pain. I never had these kind of the body pain in my entire life. So these were so worst experience I ever had. I never imagined like I can get the COVID or I can go get the COVID positive as well, because we had the two vaccination that is known as fully vaccinated. Recently the UK government or the other government have started the third vaccine or the booster vaccine, but if you have two vaccination, that is you are fully vaccinated, right? So like I was thinking कि मुझे तो कुछ ऐसा कोविड वाला सीन होगा नहीं, and the shocking is that before going to the shift we have to do the COVID test, the LFT test, because visiting the care home, either you are doing any kind of the job, but if you are visiting the care home, you have to do the LFT test before visiting there or before entering there. So I did the test, LFT test in the morning before visiting the care home, and you won't believe me, it was negative. I submitted the picture as well on the government side. We have to submit the LFT test to the government side, and I did that, and I can't believe like it was negative test. And once I fall sick and I went to the hospital and they did the test and it came positive. This was so shocking to me, and like the doctors was also shocked like how it can be possible. मैंने आपको बता दिया, जब मैं रूम पे आया मुझे बहुत गंदी वाली ठंड लग रही थी। इतना गंदा हेडेक मेरा स्टार्ट हुआ कि आई नेवर इमेजिन लाइक दिस काइंड ऑफ द हेडेक आई कैन एवर लाइक फील, और या मुझे कभी हो सकता है। मतलब इतना गंदा हेडेक हुआ, बॉडी पेन इतना तेज़ हुआ। मैं मेरे पास एक्चुअली में एक ब्लैंकेट है, दो बेडशीट है, तो मैंने अपनी ब्लैंकेट तो ओढ़ ही ली और ऊपर से बेडशीट भी ओढ़ ली। उसके बावजूद भी मतलब मेरा ठंड जो है ना, शिवरिंग
इट वाज़ नॉट गोइंग अवे फ्रॉम मी, और हेडेक इतना तेज़ हो रहा था, मैंने पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, आयोडेक्स या विक्स वगैरह लगाई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो देन व्हाट आई डिड कि कंबल उम्बल ओढ़ा, मैंने लाइट बंद करी, और मैं आई ट्राई टू स्लीप कि मैं अगर सो जाऊँगा तो मेरे को थोड़ा हेडेक फील कम होगा, ये बॉडी पेन कुछ फील ही नहीं होगा, बिकॉज़ व्हेन यू आर लाइक स्लीपिंग ना, तो आपको कोई पेन वगैरह फील होता नहीं है। दिस इज़ जस्ट माय ओन थ्योरी। तो मतलब मैं ऐसे ही मोस्टली करता हूँ, जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह होती है तो आई वांट टू स्लीप। तो इससे मेरे को थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स फील हो ही जाता है। तो मैं वैसे ही करने की सोच रहा, लेकिन भाई फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। ऐसे ही मैं 5-5 मिनट सो रहा, 2 मिनट सो रहा, 5 मिनट सो रहा, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया। यू वोंट बिलीव, बट आई वाज़ क्राइंग, लिटरली आई वाज़ क्राइंग होल नाइट। पूरी रात मतलब रोता रहा ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया, मतलब पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म कर नहीं सकता था, बिकॉज दे दे आर इन इंडिया, और मैं किसी को वैसे ही परेशान नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, लाइक दे आर इन इंडिया और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो लाइक इट वाज सो शॉकिंग एंड सो वर्स्ट सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इन दिस सिनेरियो व्हाट आई हैव टू डू, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, ना मेरे कोई फ्रेंड्स है, ना सिबलिंग्स है, मतलब फ्रेंड्स हैं बट दे आर से इन द सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन। जो मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को मे बी ज़्यादा पता हो या चीज़ें पता हो, बट दे आर इन द सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। तो इस वजह से आई डिडंट बॉदर कि उन लोगों को भी परेशान करूं। बट फिर आई थॉट कि सुबह होते ही आई विल कॉल माई जीपी एंड टेल देम दैट this was happening from last evening and they will suggest me the better whatever they can. So सुबह 9 बजते ही आई स्टार्ट रिंगिंग दैम। मैंने उनसे कॉल कनेक्ट हुआ मेरा 9:15-16 के करीब। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि यू शुड कॉल 111 और 999। जब मैंने 111 पे डायल किया एंड आई इन्फॉर्म देम एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आई गेव द डिटेल्स and after that like they asked me whether you want to visit the GP, they can immediately book the appointment for me, or the other option is they can send the ambulance instant, like it will take 30 or 40 minutes. So I told them like I am not able to visit my GP, it would be better if you can send an ambulance for me, because I don't have the enough energy, because like last night I have been vomiting and shivering. My like body is not even able to walk, like I'm not even able to walk when I try to walk, like I have to take the support of the wall or something, then only I was able to walk. So then they said okay, no problem, don't worry about anything, we are sending the ambulance straight away for you. Then they like after 30 or 40 minutes the ambulance came to straight away, and the ambulance person, like nurses I should call them, or the doctor, I'm not sure, maybe the nurses I should call them. So nurses came straight away to my room and they they said the ambulance is outside to the door, if you are not able to walk then we can lift you to the ambulance. So I said like just give me 5 minutes, I will like take my water bottle and everything. So मैं सामान वगैरह कलेक्ट किया, देन आई वेंट टू दी एम्बुलेंस। तो उसके बाद वो मेरे को हॉस्पिटल ले गए सेफुली। बट लाइक वाइल गोइंग टू दी हॉस्पिटल विद इन दी एम्बुलेंस, दे did the blood test and other test, I'm not sure all the test, I'm not aware of all the tests, and they were asking me all the things like how did it happen, how did you realize, when did it happen. So I like informed each and everything again and again, everything to them. So like they have also made the initial report too, so that they can submit to the hospital. So when I reached to the hospital now, first of all the things they did is they did the COVID test. I don't know how they came to know ki might possible I could be the COVID positive. So there and I don't know how many kind of the COVID tests are available, but the first they took the sample of from the nostril, from the nose, and they didn't take the sample of my the sore or the sore throat, I mean the throat. So and after some time like they took the both sample, the nose and the throat as well. So like it on the first test it came positive, and the second PCR test it also came positive. So this was the situation. But I really like
thanks to NHS and all the staff and the nurses over there, the doctors as well, because like I didn't expect कि this kind of the service they will provide. इतनी अच्छी सर्विस थी, अच्छी सर्विस इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि they did like each and everything. They did the CT scan, they did the blood test, urine test, they did the CT scan as well. I mean the chest test, chest X-ray, maybe chest X-ray, and because and they did the CT scan of my head because of I was feeling so much of headache. So like after 1 day or 2 day, I got the discharge from there, and everything was available there, and the meal was also free of cost available. Like you will get the breakfast, lunch and dinner, everything was free and included. You don't have to pay anything because we already have paid the NHS surcharge, like health insurance charge, I believe. So we don't have to worry about anything. And I asked them like the breakfast or any meal, like will it be paid? So they said no, everything is included and it is free of cost, and all the services provided by NHS and which is free of cost. So this was my experience. Yes, so now let's talk about the my opinion and the suggestions, because as we are the international student here and we don't have any siblings or our parents lives alone, like along with us. So I would like to suggest everyone, in case of any kind of the situation, like जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि आप सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो, because you know your body much better than anyone, right? So अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाले हो, या या कि आपको लग रहा है कि मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पे, या मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, सो मेक श्योर यू, इफ़ यू आर एबल टू लाइक कॉल योर जीपी, मेक श्योर यू कॉल योर जीपी, और अपना जीपी रजिस्ट्रेशन आते ही ज़रूर करवा लेना, एनएचएस रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना। ये सारी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान कब बीमार पड़ जाए ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है आपको खुद कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। तो देखो ये आज कितनी अच्छी चीज़ हुई कि अगर मैं बीमार पड़ा था तो सर्विस वाज अवेलेबल, तो ये देखो इसका बेनिफिट हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये आते ही आप लोग जितने भी हो, अगर यूके में भी हो, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, इन केस यू हैवंट रजिस्टर्ड योर जीपी, प्लीज़ मेक श्योर यू रजिस्टर्ड विद योर जीपी। तो what I was saying, yes, कि इन केस यू फील कि आप अगर बीमार हो रहे हो या होने वाले हो, तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद योर जीपी। और अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल की नीड है या एम्बुलेंस की नीड है, तो मेक श्योर यू कॉल 999 और 111। आपको किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, या लोग सोसाइटी क्या बोलेंगे या कोई क्या बोलेगा, आपको किसी की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आपको अपने से मतलब होना चाहिए। एम्बुलेंस चाहे यहाँ पे आए चाहे कहीं भी आए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि सोसाइटी क्या बोलेगी या कोई क्या बोलेगा। सीरियसली यू वोंट बिलीव मी कि आई वाज थिंकिंग द सेम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट मेक श्योर यू कॉल 111 और 999। सो वो लोग आपकी डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, एंड इफ़ दे थिंक लाइक एम्बुलेंस इज़ नेसेसरी और लाइक यू नीड द एम्बुलेंस, देन दे विल डेफिनेटली सेंड इट फॉर यू। फिर आप हॉस्पिटल वगैरह जाओगे, और जब एक बार एम्बुलेंस आ गई फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे ट्रीट यू रियली वेल, रियली वेल। दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट एनीथिंग। और मेरे ख्याल से तो आपको अगर मतलब यहाँ पे कोई अगर आपका रिलेटिव रहता है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म देम। अदरवाइज लाइक पेरेंट्स को वो इंडिया में बैठे, मतलब अगर इंडिया में है आपके या किसी और कंट्री में है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है दैट यू आर इन दी हॉस्पिटल, बिकॉज बेवजह उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, माइट पॉसिबल यू थिंक इन अ डिफरेंट वे। सो दिस वॉज माई सजेशंस, और आप लोगों ने मेरी जर्नी समझ ली। अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, मतलब रूम पे आ चुका हूँ। आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मीन्स लिक्विड मुझे कंज्यूम ज़्यादा करना है। और ही सेड कि लाइक इट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर भी हो सकता है कि, मुझे नहीं पता यार कैसे टेम्परेचर की वजह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ मैं। ही सेड द डॉक्टर टोल्ड मी लाइक यू आर डिहाइड्रेटेड, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लिक्विड्स। सो आई सेड लाइक आई एम ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। सो मुझे नहीं पता कि हाउ आई कैन डिहाइड्रेटेड, बट स्टिल फाइन, आई विल ट्राई टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर। फाइन, सो दिस वॉज ऑल माई जर्नी। होपफुली आपको भी समझ आ गया व्हाट यू हैव टू डू इन एनी काइंड ऑफ दिस सिचुएशन, द वर्स्ट सिनेरियो और वर्स्ट कंडीशन। सो
होपफुली यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सी आई एम नॉट श्योर लाइक बट इट इज़ गेटिंग बेटर, लाइक आई कैन स्माइल प्रॉपरली, लाइक can you see, and I can anyhow it is much better from the last one. You can see I can able to close my eyes at least, because last time I was not even able to close my eyes, so now at least I can close my eyes. Like if I try to blink, it is not like happening properly, but somehow it is much better than the last.